बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं और लास्ट लेक्चर में अनलाइकली हम जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में बात करते रहे, एरियाज के बारे में बात करते रहे, दिस टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग सोशल साइकोलॉजी टू यू। इट इज़ समवॉट जिसको कहते हैं आपके अभी तक बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में इंतहाई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, अब हम थोड़े से आम अल्फाज में सोशल साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। और सोशल साइकोलॉजी बेसिकली आपको इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि ये हमारी और आपकी रोज़मर्रा की जो रूटीन में हम अपने देख रहे हैं उससे रिलेटेड साइकोलॉजी है। व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी पहले थोड़ा सा डिस्कस करके और फिर सोशल साइकोलॉजी के अंडर आने वाले तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप एरियाज ऑफ साइकोलॉजी जब आपने पढ़ा था तो सोशल साइकोलॉजी को हमने वहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया था, जिसमें कि हमने आपको ये बताया था कि ये रिलेटेड है विद द इंडिविजुअल डीलिंग विद अदर इंडिविजुअल्स एंड इट इंक्लूड्स मैनी बिहेवियर्स सच एज इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, क्राउड बिहेवियर, आपस में ताल्लुक होना, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, ये सब सोशल साइकोलॉजी के अंडर आता है। It is about understanding individual behavior in a social context. The scientific field that seeks to understand the nature and causes of individual behavior in social situations. Social psychologists therefore deal with the factors that lead to us to behave in a given way in the presence of others and look at the conditions under which certain behavior and feelings occur. Social psychology is to do with the way these feelings, thoughts, beliefs, intentions and goals are constructed and how such psychological factors in turn influence our interactions with others. So these are the factors which are studied under this area of psychology. और इतने सारे factors हैं, आप social psychology को आप देखिएगा, आप अपने ऊपर अप्लाई करते जाएं और ये आपके अपने ऊपर अप्लाई होती जाएगी in a social context. इसके अंदर जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं, दे कैन बी लीडरशिप, दे कैन बी प्रेजुडिस, दे कैन बी फ्रेंडशिप, लाइकिंग, और हम ये इन सारी बातों के पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों होती है, क्या थेरीज हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो सोशल साइकोलॉजी के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप आपके जहन में क्या चीज़ पहली आती है कि जब हम लीडर की बात करते हैं तो हमारे जहन में मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स तो नहीं आ जाते, कहीं मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपके जहन में पॉलिटिकल लीडर आ जाते हैं, बट it should be considered, leadership should be considered in a wider context and psychology में leadership means के आपको साइकोलॉजिकल वेज जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं बिहाइंड लीडरशिप क्वालिटी या लीडर बनने में या लीडरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अडॉप्ट करना या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आइडेंटिफाई करना, दैट इज एक्चुअली डिस्कस्ड अंडर द डोमेन ऑफ साइकोलॉजिकल लीडरशिप। जो कि हम इसमें लीडरशिप के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ऑथर्स हैं जो आपको मिलेंगे और हर तरह की लीडरशिप पे वो बात करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे इस पे हमें किताबें मिलती हैं और टॉपिक्स मिलते हैं और इसको छोटे से 40 मिनट्स के 1.5 घंटे के लेक्चर में कवर करना जो है हमें बड़े ही इम्पोर्टेंट सिर्फ एस्पेक्ट्स, और आपको चूँकि आप बार बार अपने जहन में ये बात रखेंगे यू आर स्टडिंग अ कोर्स दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, तो हम हर चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बाद आपका तो जिस चीज़ में आपका शौक है उसकी डिटेल्ड स्टडी हम चाहेंगे कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप आगे करें। तो दिस टॉपिक इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड स्टडिंग लीडरशिप मीन्स के 100 ऑफ किताबें पढ़ के और उसके बाद कुछ एक्सट्रैक्ट करके और फिर आपके सामने पेश किया जाए, लेकिन हम बार बार आपको याद दहानी कराएं कि दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ all the topics of psychology because you are studying the course of introduction to psychology. So what is leadership? It is a process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task. ये एक definition है इसकी. It is also organizing a group of people to achieve a common goal. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजर जो है जो एक ऑर्गेनाइजर का काम है वो क्या है? वो लीडर है। The leader may or may not have any
फॉर्मल अथॉरिटी, उसके पास बाज़ दफ़ा फॉर्मल अथॉरिटी नहीं भी होती। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल अपने आप से दें आप, तो इट्स नॉट के आप अगर फ्रेंड्स का कोई ग्रुप बनाते हो तो कोई लीडर असाइन नहीं करते उसमें, लेकिन ऑटोमेटिकली देयर इज समबडी जो कि डोमिनेट कर जाता है आपको आपके गोल्स अचीव करने में, हेल्प करने में, ऑर्गेनाइज करने में और मेजर स्टेप्स लेने में इन दैट ग्रुप, सो दैट particular person can be a leader. A leader is a person who has a vision, a drive, मोटिवेशन आप पढ़ चुके हो, पता है आपको मोटिवेशन और ड्राइव का रिलेशन आपको पता है। व्हाट ड्राइव? गोल रिलेटेड बिहेवियर की तरफ बढ़ने को हम कहेंगे कि उसमें वो ड्राइव होनी जरूरी है, एंड अ कमिटमेंट टू अचीव दैट विजन एंड द स्किल्स टू मेक इट हैपन. Having a great idea and assembling a team to bring that concept to life is the first step in creating a successful business venture. While finding a new and unique idea is rare enough, the ability to successfully execute this idea is what separates the dreamers from leaders. So, leaders और dreamers में क्या फ़र्क है कि dreamers जो हैं वो idea तो लेकर आ सकते हैं, but its implementation एक leader ही कर सकता है उसकी. A leader has a vision. विजन होना जरूरी है, थोड़ा सा उसमें फ्यूचर को डिपिक्ट करने की सलाहियत, आगे देखने की कि मैं ये इन स्टेप्स क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है जो कि उठाए जा रहे हैं इस वक्त. लीडर सी अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड और अ गोल दैट नीड्स टू बी अचीव्ड. It may be something that no one else sees or simply something that no one else wants to tackle. और ये यूनिक भी हो सकता है इन अ वे कि जिसको कि कोई टैकल नहीं करना चाह रहा, जिस प्रॉब्लम को कोई अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा, वो मे बी अ लीडर इज देयर टू इनिशिएट इन अटेम्प्टिंग दैट प्रॉब्लम, डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. Whatever it is the focus of the leader's attention, and they attack it with a single-minded determination. The drive to see it through. It is not enough to just have a vision. Lots of people see things that should be done, things that should be fixed, great step forward that could be taken. What makes leaders different is that they act. They take the steps to achieve their vision. अच्छा, अब एक चीज़ तो वाज़े है, ये सारी बातें आप जो पढ़ रहे हैं इसमें से आप ये देखें, गौर करें, तो do you think कि everybody is a leader to some extent at some situation in their lives, चाहे एक दफ़ा ही सही. जस्ट जब ये हमारा लेक्चर ख़त्म होगा तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा. क्या हर शख्स कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी एक लम्हे के लिए ही सही, कभी ना कभी किसी एक वक्त में, किसी एक दिन में, किसी एक मौके पे, किसी सिचुएशन में लीडर है, रहा है या बन सकता है? तो इसका जवाब मुझे जब ये पढ़ लीजिएगा सारा तो फिर आप मुझे बताइएगा. लीडरशिप बिगिंस विद सेल्फ नॉलेज. सेल्फ नॉलेज इज द बेसिस फॉर कैरेक्टर. कैरेक्टर इज द रूट ऑफ इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर लीडरशिप. दिस इज गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट. 2001 में इसको दिया गया और ये इसको बताया गया कि ये इसका स्टार्ट कैसे होता है. लीडरशिप बिगिंस विद सेल्फ नॉलेज. तो सेल्फ नॉलेज क्या है? सेल्फ अवेयरनेस है. और आप जस्ट नोटिस कि अभी तक जितने लेक्चर्स हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तमाम लेक्चर्स में जो फोकस है मेरा वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर बिहेवियर्स एंड देन ट्राई टू understand others' behavior. So don't try to understand others' behavior before you understand your own behaviors. So leadership, once again, it's a quality, good quality, a leadership quality which is like started by knowing your own self first, and then you think कि जी अगर आपकी अपनी नॉलेज होगी, अपने बारे में आप सही समझते हैं तो आप ज़्यादा डिटर्मिन होंगे, आप विजन रखने वाले होंगे और फिर आप दूसरों को भी समझने वाले होंगे. तो लीडरशिप की ये एक स्टार्ट है, ओरिजिन है. इट इज़ ऑल अबाउट मोटिवेटिंग, inspiration, talking people to greater heights, working with participants on the how and helping them figure out what and why. Encourage them to push themselves to achieve the highest possible performance.
action, enabling, not telling, talking the talk and walking the walk, walking alongside. This is all about the leadership. The role of leadership is that leader can be a good teacher, they can teach very good, doesn't put down those they are working with, लोगों को डाउन नहीं करते जिन लोगों के साथ काम करते हैं. लीडर की एक क्वालिटी ये भी है. डाउन करने का क्या मतलब है? अप्रिशिएट करते हैं, या उनको लो फील नहीं कराते, या उनकी प्रेजेंस में जो है वो कोई बंदा अपने आप को कमतर नहीं समझता. लीडर में ये स्टडीज के बाद साबित हुआ है कि लीडर्स में ये क्वालिटीज होती हैं. और एक हजरत अली का कौल है कि वो शख्स जिसकी महफिल में कोई शख्स अपने आप को कमतर ना समझे, वो शख्स जो है वो ऊंचे दर्जे पे फायज है. तो उसका दर्जा अव्वल है कि उसके पास कोई अपने आप को कमतर ना समझे, तो वो शख्स अव्वल है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीडर्स में हम ये क्वालिटी ढूंढ रहे हैं आज के उस शख्स के पास काम करना का मतलब ये हो कि उसके पास यू आर नॉट फीलिंग लो. अ लीडर इज नॉट मेकिंग एनीबडी फीलिंग लो. ये जो हम अपनी गुफ्तगू में तंज से काम लेंगे, क्रिटिसिज्म से काम लेंगे और किसी को डाउन फील कराने के लिए ये करेंगे, हमारी नीयत डाउन फील कराने की है कि उसको तंज करके उसको डाउन फील कराएं, तो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट having a quality of leadership. rather than उसको मोटिवेट कराने में अगर हमारा कोई रोल है, मोटिवेशन में रोल क्या होता है? एनकरेजमेंट है, किसी काम के ऊपर मोटिवेशन देने का रोल है, उसको कमतर नहीं फील करा रहे. दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ लीडर. इट इज ही और शी इज हैविंग दैट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, और वो एग्जिबिट कर रहा है थ्रू दीज थिंग्स. तो रोल क्या है उसका? ये रोल होता है लीडर का. गेट्स द मोस्ट फ्रॉम दोज दे आर वर्किंग विद. कि आपकी एक आर्ट होता है, एवरीबडी इज हैविंग सम स्ट्रेंथ्स in themselves, and the art is that there is somebody to pick up that strength in other person's personality. तो आप गौर करें तो देखिएगा कि हम most of us are not leaders, and most of us are picking the weaknesses very easily from the other person rather than the strengths. आप 5 मिनट किसी से बात करें and 5 मिनट्स में आप उसकी वीकनेस बताने के काबिल होते हैं, मगर ये कोई काबिलियत नहीं है. अगर आप उसकी स्ट्रेंथ बताने के काबिल हैं 5 मिनट में, 5 minute talking with somebody and telling the strength of that somebody, then you are possessing that art of picking up the strength of another's personality. So leaders are usually having that thing, they know the right person for the right work, the strength a person possess, and किस किस्म का काम किस किस्म के बंदे को देना चाहिए तो वो अपने मैक्सिमम पे करेगा. तो इस स्ट्रेंथ के होने का मतलब ये है कि आप लीडर हो. तो एक चीज प्रूफ हो रही है इससे कि नॉट एवरी मैनेजर, नॉट एवरी हाई पोजीशन पर्सन सिटिंग ऑन अ हाई पोजीशन इज अ गुड लीडर. ही इज जस्ट इन कमांड, बट ही माइट नॉट बी अ गुड लीडर. वर्क्स, फोर्थ इसका जो पॉइंट है दैट इज वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स. रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना, रूल्स के दायरे में काम करना, और ये सब जो है दैट इज अ रोल ऑफ अ लीडर. और डेफिनेटली क्या रूल्स, जिस भी जगह पे कोई भी काम हो रहा है उस जगह पर रूल्स को फॉलो करवाना. इट कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल. तो अभी आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल का बताते हैं. Leadership style is the manner and approach of providing direction, implementing plans and motivating people. Positive leaders use rewards to motivate employees. Negative leaders use penalties with employees. These leaders act domineering and superior with people. Negative penalties include days off without pay, reprimanding in front of others, assigning unpleasant job tasks. तो ये हो गए जनाब आपके नेगेटिव लीडर्स. बट इट इज ऑन द जॉब. इनफॉर्मल और फॉर्मल की मैंने आपसे बात की. देयर आर लीडर्स, पीपल कैन बी लीडर्स नो मैटर इफ दे आर इवन नॉट ऑन जॉब. तो वो इनफॉर्मल लीडर्स हैं. यू माइट बी अ लीडर इन अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स,
एंड यू माइट बी पोजेसिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके फ्रेंड्स के ग्रुप को लीड कर रहे हैं आप अगर, although that friends are equal and you believe the that policy के जी equally friends deal करते हैं एक level of understanding पर, but if you are in a group तो आप नोटिस कीजिएगा कि कोई एक शख्स हमेशा लीडरशिप की पोजीशन पर होता है और उससे मशवरा लिया जा रहा होता है, उससे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा होता है अपना काम, और उससे ही जो है वो कोई मेजर टास्क या मेजर डिसीजन में हेल्प ली जा रही होती है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी होती है जो कि लीडर में होनी चाहिए और वो क्वालिटी उसमें होती है। तो दैट इज एन इनफॉर्मल लीडर। और हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो फॉर्मल लीडर की ऑन जॉब है, और एंड देन ही और शी इज वर्किंग विद एम्प्लॉयज और वो जॉब पर एक हायर पोजीशन पर है। तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ लीडरशिप। नाउ व्हाट आर द 3 प्राइमरी टास्क ऑफ अ लीडर? They set direction, that is a mission, goals, and their according to their vision. Build commitment, motivate और inspire करते हैं. Confront challenges, innovation, deal with change, turbulence, take risks और risks भी लेते हैं. ये उनकी कुछ primary tasks हैं. So these are the 3 basic tasks of a leader. The fact about leadership is that everyone can be a leader to some extent at some place, जो मैं आपको कह रही हूँ. So be ready, you are also a leader. आप भी आपके अंदर भी वो qualities exist करती हैं कभी ना कभी लाइफ में, कहीं ना कहीं लाइफ में, किसी ना किसी जगह आप भी लीडर हैं. Just believe in yourself. Plus जो बात है कि it's not a position जो के लीडर को लीडर बनाती है, इट्स एक्शन जो कि लीडर को लीडर बनाता है, और उन एक्शन की बेस पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये चीजें सामने आती हैं, नॉट ऑन द बेस ऑफ द पोजीशन. सो इट्स नॉट अबाउट जॉब एंड जॉब पोजीशन, इट्स अबाउट द लीडरशिप and the qualities of leadership जो कि नजर आ रही हैं in the action of any personality. That is the actually leadership studies are not done on people who are on positions, but people who are on position may be a good leader or may not be a good leader. How people become leaders according to the theories, as we have said to you before कि psychology is a science. So जो भी चीज़ हम करेंगे वो जो theories बन चुकी हैं, वो जो scientific studies हो चुकी हैं, observations के बाद, hypothesis के बाद, एक experimental condition से गुजरने के बाद अगर कोई conclusion पे पहुँचे हैं तो we will discuss only those things. और बाकी हमारी कुछ चीज़ें हमारी राय होती हैं based on our theories and observations, but actually we will discuss theories related to leadership. So how people become leader? There is a theory that is a base theory of leadership. Base theory of leadership notes that there are 3 basic ways to explain how people become leaders. Number 1, a crisis or important event may cause a person to rise to the occasion, which brings out extraordinary leadership qualities in an ordinary person. Number 2, some personality traits may lead people naturally into leadership roles. Number 3, people can choose to become leaders. People can learn leadership quality skills. This is the transformational or process leadership theory. It is the most widely accepted theory today and the premise on which this guide is based. So आपने देखा कि ये 3 बातें जो हैं ये हमें ये समझा रही हैं कि people किस तरह से लीडर बन सकते हैं. एक तो इवेंट बेस लीडर बन सकते हैं, कोई क्राइसिस ऐसा आया जिसमें के और कोई सिचुएशन ऐसी आई कि जिसमें एक लीडर को अपनी लीडरशिप क्वालिटी शो करने का मौका मिला, और क्योंकि वो क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहा था. तो समटाइम्स यू आर नॉट नोइंग अबाउट योर लीडरशिप एंड सडनली इन अ सिचुएशन यू आर कमिंग अप विद सम पॉइंट, सम डिसीजन, सम विजन, एंड यू आर नोइंग दैट कि हमारे सामने ये बात आती है कि इस शख्स में लीडरशिप क्वालिटीज थी. और सेकेंडली द पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं आपके अंदर, कुछ ऐसे ट्रेट्स मौजूद हैं ऑलरेडी जो कि आपको लीडर बना रहे हैं और आप लीडरशिप रोल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं. और thirdly, it can be done through learning or by choosing yourself to becoming a
लीडर, क्योंकि यू कैन लर्न दीज स्किल्स. जो जितनी बातें मैंने आपको की, क्या कोई ऐसी चीज थी जो आप लर्न नहीं कर सकते? यू कैन लर्न. जितनी बातें हम अभी लीडरशिप में पढ़ रहे हैं, दे कैन बी अडॉप्टेड बाय आवरसेल्फ. इफ even if we are not a leader, we can adopt these skills and we can become the leader. Leadership styles. क्या क्या leadership styles हैं? Basically, what is the leadership style? It is the manner and approach of providing direction, implementing plans, and motivating people. Kurt Lewin, 1939, he was a social psychologist. He led a group of researchers to identify different styles of leadership. This early study has been very influential and established three major leadership styles. The three major styles of leadership are: number one, authoritarian. आपको नाम से कुछ समझ आ रहा होगा कि कौन सा स्टाइल होता है. Participative, ये भी है एक स्टाइल. इसको अथॉरिटेरियन को ऑटोक्रेटिक भी कहते हैं और पार्टिसिपेटिव को डेमोक्रेटिक भी कहते हैं. फिर डेलीगेटिव और फ्री रेन. फ्री रेन, इसमें भी आपको कुछ समझ आ रहा होगा. आगे हम इसकी डिटेल्स देखते हैं कि क्या है. अथॉरिटेरियन लीडरशिप और autocratic leadership style is the style which is used when leaders tell their employees what they want to do, what they have done and how they want it accomplished, without getting the advice of their followers. Some of the appropriate conditions to use it is when you have all the information to solve the problem. You are short on time and your employees are well motivated. Some people tend to think of this style as a vehicle for yelling, using demeaning language and leading by threats and abusing their power. This is not the authoritarian style. Rather, it is an abusive style, unprofessional style called bossing people around. So, see, leadership में और इसमें हमें differentiate करना होगा. It's not about yelling. It's not ऊंचा ऊंचा बोलना, ऊंचा abusive language को use करना is not authoritarian style, but it is the style in which one is a leader and there are few followers of that leader जो कि उसके बहरहाल leadership की तमाम qualities और leadership tasks और roles को अप्लाई करते हुए एक अथॉरिटेटिव लीडर वहाँ पे मौजूद है जिसको कि कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं. बट इट्स नॉट अबाउट कि वो उसको उसकी येल करने पे और चीखने चिल्लाने पे और उसकी अब्यूसिव लैंग्वेज पे फॉलो कर रहे हैं. दैट पर्सन कैन नॉट बी अ लीडर. द अथॉरिटेरियन स्टाइल शुड नॉर्मली ओनली बी यूज्ड ऑन रेयर ओकेजन्स. ये आपकी राय हो सकती है कि it should be used on rare occasions, but if somebody is following a authoritarian style in certain situation and he is a leader and he is approved by the followers, then of course ये authoritarian style persist कर सकता है और ये रह सकता है. Then participative democratic style जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि participation है on both the side. The followers are also participating in the decision making, but actually there is a leader who is initiating the things, but with the participation of other people. So this style involves the leader including one or more employees in the decision making process. And they are actually, the leader maintains the final decision making authority. So using this style is not a sign of weakness, rather it is a sign of strength that your employees will respect. This is normally used when leader has one part of the information and employees have other parts. Leader is not expected to know everything. This is why knowledgeable and skillful employees are employed. Using this style is of mutual benefit. It allows them to become part of the team and allows you to make better decisions. What do you like? Do you like authoritarian style or a democratic? Most of the people will be telling you that हमें तो participative या democratic style पसंद है क्योंकि हमारी involvement उसमें होती है और this leadership style is better. And it is proved that this is a better style because everyone is free and everyone is having the somehow some power to participate in decision making in the policies, whatever policies are going in the company, or if it is employee based then it is the company. If it is a political group then of course it's having some own strategies or policies about certain ideas, certain things.
delegative या free rein जिसको हम कहते हैं. In this style, the leader allows the employees to make the decisions. However, the leader is still responsible for the decisions that are made. This is used when employees are able to analyze the situation and determine what needs to be done and how to do it. You cannot do everything. You must set priorities and delegate certain tasks. This is not a style to use so that you can blame others when things go wrong. Rather, this is a style to be used when you fully trust and confidence in the people below you. This is the characteristics of free rein. और ये आपके सामने 3 स्टाइल्स हैं और इनकी जो है लाइकिंग और ग्रुप एटमॉस्फेयर और प्रोडक्टिविटी में हमने इसका एक कंपैरिजन चार्ट सा बनाया हुआ है. और यू कैन सी के लाइकिंग फॉर द लीडरशिप अथॉरिटेरियन में ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, बट पार्टिसिपेटिव में मोर दे आर लाइक मोर. डेलीगेटिव में भी इतने पसंद नहीं किए जाते बिकॉज ग्रुप एटमॉस्फेयर क्या है उनका रीज़न उसकी ये है कि एटमॉस्फेयर उसका एग्रेसिव है, जो आपका अथॉरिटेटिव है और डिपेंडेंट है और सेल्फ ओरिएंटेड है. बट द पीपल हु पार्टिसिपेटिव स्टाइल दे लाइक मोर बिकॉज दे आर फ्रेंडली, ग्रुप सेंटर्ड और टास्क ओरिएंटेड. सिमिलरली डेलीगेटिव में दे आर फ्रेंडली, ग्रुप सेंटर्ड बट प्ले ओरिएंटेड. सो प्रोडक्टिविटी, हाई लीडर प्रेजेंट, लो लीडर एब्सेंट. रिलेटिवली हाई होती है इसकी प्रोडक्टिविटी क्योंकि अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लीडर, क्योंकि अफेक्ट नहीं होता उसके. एंड लो होती है डेलीगेटिव की बिकॉज इंक्रीज इन एब्सेंस ऑफ लीडर. So there is a process known as emotion laden process which can be perceived as a particularly emotion laden process with emotions entwined with the social influence process. In an organization, the leader's mood has some effect on her group. These effects can be described in 3 levels. The mood of individual group members, that is group members with leaders in a positive mood experience more positive mood than do groups members with leaders in a negative mood. The leaders transmit their moods to other group members through the mechanism of emotional contagion. Mood impurity may be one of the psychological mechanisms by which charismatic leaders influence the followers. The mood of individual group members is thus the basis for this. Number 2 is the affective tone of the group. Group affective tone represents the consistent of homogeneous affective reactions within a group. Group affective tone is an aggregate of the moods of the individual members of the group and refers to mood at the group level of analysis. Groups with leaders in a positive mood have a more positive affective tone than do groups with leaders in a negative mood. It is, I think ये वो बात है जो कि आप सबको पता है, मालूम है कि ये रोज़मर्रा की हमारी रूटीन है कि leaders in a positive mood have a more good positive impact on the followers or the people who are around them. So third is group processes like coordination, effort, expenditure and task strategy. Public expressions of mood impact how group members think and act. When people experience and express mood, they send signals to others. Leaders signal their goals, intentions and attitudes through their expressions of mood. For example, यहाँ पर एक example आपको बताते हैं. Expressions of positive moods by leaders signal that leaders deem progress toward goals to be good. The group members respond to those signals cognitively and behaviorally in ways that are reflected in the group process. यानी cognitively and behaviorally का क्या मतलब कि वो believe करते हैं from inside and they also behave. उनका action भी ये show करता है कि they believe in that thing. So both mentally अंदर से भी और बाहर से भी, जिसको आप कहते हो कि मेंटल प्रोसेस भी उनका एग्री करता है और बिहेवियर भी उनका एग्री करता है लीडरशिप के साथ. Now the leadership theories. Early leadership theories focused on what qualities distinguished between leaders and followers, while subsequent theories looked at other variables such as situational factors and skill levels. While many different leadership theories have emerged, most can be classified as one of 8 major types. अब हम एक एक करके इन सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे. Number 1 is the great man theory.
The great man theory assumes that the capacity for leadership is inherent. तो ग्रेट मैन ने तो हमारे इस थेरी ने तो हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया कि वो ये कहते हैं कि इट इज इनहेरेंट, सो इफ यू हैव नॉट इनहेरिटेड दिस देन यू कैन नॉट बी अ लीडर. ऑफ कोर्स ये जो चीज हमें पहले समझ आ रही है इस थेरी से वो यही है. लेट्स सी कि ये क्या है. ग्रेट, दे से दैट ग्रेट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड. ओके, तो इससे हमारी कौन सी थेरी निगेट हो रही है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सीखा, थोड़ी देर पहले हम अभी अपने ही लेक्चर में ये बात की हमने कि हम लीडरशिप क्वालिटीज को अपने अंदर लाके पोजेस कर सकते हैं और हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं ऐसी क्वालिटीज को. तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेट मैन थेरी तो हम तो नहीं कर सकते. तो लेट्स सी कि हमें क्या करना चाहिए. एनीवे, दिस थेरी इज वन ऑफ द इनपुट जो ये देना चाह रहे हैं अपनी लीडरशिप में. और जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया और अपने हर लेक्चर में बताती हूँ कि साइकोलॉजी में जितनी भी थेरीज आई जो भी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर रही हैं किसी भी लेवल पे, तो किसी एक थेरी को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि इट इज ऑल द मिक्सचर ऑफ ऑल द अप्रोचेस एंड देन अप्लाइंग ऑन सम पर्सनालिटीज. और at a one time it can be of course हम किसी एक थ्योरी को किसी एक जगह पे अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट के यही एक थ्योरी है जिसको कि ये इसके अलावा कोई और थ्योरी उस पर अप्लाई नहीं होती. बट येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इनहेरिटेंस का बायोलॉजी का रोल है. और लीडरशिप कैन not only be learned but also can be inherited, and it is actually in your DNA structure that possess the qualities which is having a quality of a leadership. तो leader ये inherit भी कर सकते हैं और forefathers से भी आपके अंदर आ सकती है leadership. और according to great man theory, it portrays that great leaders are heroic, mythic and destined to rise to leadership when needed. The term great man was used because at the time leadership was thought of primarily as a male quality, especially in terms of military leadership. तो इसलिए ये इसको great man theory कहा जाता है, क्योंकि it was assumed कि ये basically quality man में ही अकर करती है और ये military leadership में use होती थी. The second theory is the trait theory. Similar in some ways to great man theory, some ways. It assumes that people inherit certain qualities and traits that make them better suited to leadership. Trait theory often identifies particular personality or behavioral characteristics shared by leaders. If particular traits are key features of leadership, then how do we explain people who possess those qualities but are not leaders? This question is one of the difficulties in using trait theory to explain the leadership. So let's see the other theory, that is the contingency theory. This theory focuses on particular variables related to the environment that might determine which particular style of leadership is best suited for the situation. According to this theory, no leadership style is best in all situations. जो कि मैंने बात की ना कि हर लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन के लिए नहीं होता, और जो मैं आपको बता रही थी कि हर शख्स हर सिचुएशन में लीडर भी नहीं होता. और सक्सेस डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडिंग द लीडरशिप स्टाइल, क्वालिटीज ऑफ द फॉलोअर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशंस. Situational theory proposes that leaders choose the best course of action based upon situational variables. Different styles of leadership may be more appropriate for certain types of decision making. For example, in a situation where the leader is the most knowledgeable and experienced member of a group, an authoritarian style might be most appropriate. क्यों authoritarian style is appropriate here? Because that particular leader is better, like he is a knowledgeable person than the other followers, and he is above in some qualities. कुछ औसाफ उसके उनसे बेहतर हैं, या उस नॉलेज एक ऐसी सिफ्त है जो कि उसमें सबसे ज़्यादा है अपने ग्रुप में. तो अथॉरिटेरियन स्टाइल अगर इक्वलिटेरियन स्टाइल होगा तो उसमें चूंकि इक्वल चांस है, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इक्वली, तो उसमें इक्वल चांस की वजह से हर बंदा चूंकि बराबर नहीं है उस नॉलेज में, तो एक बंदे के की अथॉरिटी में फिर कमी आ जाएगी, लीडरशिप
जो है वो अपने जिसको कहते हैं कि फैक्टर्स को, तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि एक शख्स अगर लीडरशिप की क्वालिटी रखता है तो वो है इस स्टाइल में, सिचुएशनल स्टाइल में, जिसमें कुछ ख़ास और सिफ्त की वजह से, किसी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसको ये क्वालिटी मिली है इस सिचुएशन में. इन अदर इंस्टेंसेस वेयर ग्रुप मेंबर्स आर स्किल्ड एक्सपर्ट्स, अ डेमोक्रेटिक स्टाइल वुड बी मोर इफेक्टिव इन दिस सिचुएशनल थ्योरी. तो बिहेवियरल थ्योरी में जैसे कि आपको फिर से एक दफा बिहेवियर का जिक्र आ गया, ये कौन सी थ्योरी हो सकती है? इट माइट बी लर्नड, समथिंग लर्निंग शुड बी एसोसिएटेड, समथिंग पनिशमेंट, रिवॉर्ड के जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ जाए, वो सब बिहेवियरल थ्योरीज में इंक्लूडेड होता है. बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आर बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट born. Based on their learning, based on their rewards, based on their reinforcements, based on their punishments, actually they learned it. Learning आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं. They learned it and they are actually not born with it, but they learned it. Rooted in behaviorism. The idea has been rooted in, of course, behaviorism school of thought. This leadership theory focuses on the actions of leaders, not on mental qualities or internal states. According to this theory, people can learn to become leaders through teaching and observation. तो इस theory के मुताबिक जो है ये थ्रू टीचिंग, मॉडलिंग, लर्निंग के जितने एस्पेक्ट्स अब तक आप पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक ये लर्नड है. इट्स नॉट इनबॉर्न. Behavioral theory. Behavioral theories of leadership are based upon the belief that great leaders are made and not born. एज यू नो कि अभी तक आप जो लर्निंग के जितने भी एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से जो एस्पेक्ट है वो दैट इज इट इज लर्न थ्रू पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स, थ्रू योर reinforcements, and these are the basis for any kind of learning. So behavioral theory basically is emphasizing on the learned behavior of an individual. Leadership is actually learned through different means of learning, but it is not actually inborn, or it is rooted in that school of behaviorism, and the leadership theory focuses on the actions of leaders, not on the mental qualities or internal states. According to this theory, people can learn to become leaders through teaching and observation. ऑब्जर्वेशन क्या, मॉडलिंग, जो मैंने आपको अप्रोच सिखाई थी कि जी मॉडल को आप देख के, मेंटोर्स को देख के, आप अपने कोई रोल मॉडल्स को देख के यू लर्न सर्टेन थिंग्स एंड देन यू अडॉप्ट दोस थिंग्स एंड देन यू आर एक्चुअली यू लर्न दोस थिंग्स. तो उसको हम लीडरशिप पे अगर करें इम्पोज तो हमारा बिहेवियरल थ्योरी इज द लर्न थ्योरी. देन कम्स द पार्टिसिपेटिव थ्योरी. Participative leadership theory suggests that the ideal leadership style is one that takes the input of others into account. These leaders encourage participation and contributions from group members and help group members feel more relevant and committed to the decision-making process. In it, however, the leader retains the right to allow the input of others. पार्टिसिपेशन से, जैसे नाम से आपको समझ आ रहा है, तो पार्टिसिपेशन होती है इसमें अदर ग्रुप मेंबर्स की विद द लीडर. एज यू कैन सी कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें एवरीबडी इज गिविंग सम इनपुट. मैनेजमेंट थ्योरी. मैनेजमेंट थ्योरी ऑल्सो नोन एज ट्रांससेक्शनल थ्योरी focuses on the role of supervision, organization and group performance. This theory bases leadership on a system of rewards and punishments. It is often used in business. When employees are successful, they are rewarded. When they fail, they are reprimanded or punished. This is a management theory. Then comes the relationship theory. It is also known as transformational theories, focus upon the connections formed between leaders and followers. Transformational leaders motivate and inspire people by helping group members see the importance and higher good of the task. These leaders are focused on the performance of group members but also want each person to fulfill his or her potential. Leaders with this style often have high ethical and moral standards. So this was about relationship theory, and these were all the theories related to leadership, which describes the different kind of leadership, different how the leadership is formed,
and then we are studying the qualities of a leadership. Leadership qualities associated with exceptional leadership include such attributes. अब वो चीज़ें जो कि leadership के attributes हैं, those includes like self-awareness. It is having a clear perception of your personality, जो मैंने पहले भी अभी बताया आपको कि अपने बारे में जानना, बेसिकली आपकी हर पॉजिटिव एस्पेक्ट, हर पॉजिटिव पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड के साथ जो है, द मेन थिंग इज दैट द पर्सन हु हैज एक्वायर्ड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर वेरी पॉजिटिव इन योर पर्सनालिटी इज एक्चुअली अ पर्सन जिसमें सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज्यादा होगी. It is having a clear perception of your own personality, including strengths, weaknesses, thoughts, beliefs, motivation and emotions. Self-awareness allows you to understand other people, how they perceive you, your attitude and your responses to them in the moment. ये क्या था हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमने एक चीज पढ़ी थी ना. तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, आप कितने, आपकी सेल्फ एस्टीम है, इन सब से रिलेटेड चीजें सेल्फ अवेयरनेस होगी तो आपको ये पता होगा कि व्हाट इज योर सेल्फ एस्टीम. मिशन. Leaders know what their mission is. They know why the organization exists. A superior leader has a well thought out mission describing the purpose of the organization. That purpose needs not to be abstract but rather descriptive, clear and understandable. तो इसको इधर उधर की बात नहीं, बड़ा क्लियर फोकस किस्म का जो है विजन है, बड़ा फोकस किस्म का प्रॉब्लम को समझने की सलाहियत है. और देन कम्स द विजन. वेयर डू यू वांट योर ग्रुप, टीम, ऑर्गेनाइजेशन टू गो. आपसे एक सवाल किया जाता है ना अक्सर कि 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखेंगे. इट इज जस्ट एक्चुअली आपके, हम मालूम करना चाहेंगे कि आप कितने फोकस्ड हैं और क्या विजन रखते हैं अपने बारे में और क्या गोल्स रखते हैं आप, और एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, रादर देन कि हम आपसे एब्स्ट्रैक्ट में आपसे हम एक जिसको कहते हैं कि इस तरह से बात करें कि जिसमें हम वी फाइंड कि जी ये पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड और इसको अपने गोल्स, अपने इरादों का ही नहीं पता. तो लीडरशिप में एक जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द विजन, टू सी द थिंग्स बिफोर हैंड, to see about your future, to plan about it, to have a certain goal, to go having a mission about your life, you having a mission about a particular organization you are leading. So if you want the organization to grow, तो आपके पास एक clear vision होना चाहिए. A vision needs to be abstract enough to encourage people to imagine. जो इसमें इमेजिनेशन की आप में सलाहियत होनी चाहिए कि अगले 4 साल में, 5 साल में आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं और इस गोल को अचीव करने के बाद ये सूरत हाल होगी, और ये आप अपने फॉलोअर्स को भी बताते हैं. दिस इज अ क्वालिटी जो कि लीडरशिप में होती है. देन कम्स द गोल. आपके क्या गोल्स सेट किए हुए हैं और कितनी डेडलाइंस आपने उसको मीट करने के लिए रखी हैं. हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू अचीव इट्स मिशन एंड विजन एंड हाउ विल यू मेजर योर progress. Like a vision, goals need to be operational, that is specific and measurable. If your output and results can't be readily measured, then it will be difficult to know if you have achieved your purpose. The leader may have wasted important resources, time, money, people and equipment pursuing a strategy or plan without knowing if it is truly succeeded. Then comes the communication skills. For leaders, it is not enough to just know what to say, but how to say it in a way that persuades people to act. Leadership communication skills help leaders convey their principles and intelligence within all of their business communications. Developed leadership skills inspire other people and help develop a sense of purpose surrounding business goals. Leadership communication skills often focus on the recipient of your message. Learning how to motivate and inspire action in team members is an acquired skill. Like any skill worth having, it requires an investment of practice and coaching, and the dividends are valuable. Mastering leadership communication skills can improve effectiveness and showcase a high level of business acumen. Then comes facilitating the skills. Now,
आप किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे स्किल्स को. दीज आर द क्वालिटीज विच लीडर्स आर एक्वायरिंग और दे आर हैविंग. दे कुड बी डाइवर्स आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव फॉर एनी सिंगल एजेंडा, बट एन इफेक्टिव लीडर विल वर्क टुगेदर रीचिंग अ कंसेंसस. It ensures that discussions take place in a structured manner without losing sight of the outcome. एक structured manner में discussion होती है जो आप जो facilitating skills हैं उसके मुताबिक हम जो बात करते हैं तो अपनी बात के फोकस को हमेशा सामने रखते हैं. The goal should be there और उसमें एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू होती है कि अगर हम इस पॉइंट की तरफ निकलेंगे तो ये पॉइंट अराइज होगा, तो इस पॉइंट को इस तरह से टैकल किया जाता है और अपने गोल या अपने मिशन को कहीं भी हिलाया जुलाया नहीं जाता. इट एक्ट्स एज एन आइस ब्रेकर बाय एंगेजिंग फॉलोअर्स एंड कीपिंग अप द मोमेंटम को भी नहीं तोड़ा जाता और ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हैं. देन कम्स द मेंटोरिंग स्किल्स. इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस वाइजली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. दिस हेल्प्स फॉलोअर्स इन रिकवरिंग फ्रॉम एनी ग्लिच और स्टम्बलिंग ब्लॉक. कोई भी ब्लॉक, कोई भी हर्डल, कुछ भी आ जाए रास्ते में तो मेंटोरिंग स्किल्स आर देयर. It gives the chance to know the other person well. It gives a fair idea where to draw the line. Now comes the influence and motivation skills. It is a like आप जिस तरह से कह सकते हो कि influence और motivation skills जो आप किसी को motivate करना, किसी को किसी सिम्त में जो है वो energize करना, it's a quality of a leader. और it is a way के through good communication one can influence and persuade others. जैसे कि communication skills are important, तो similarly आपके अंदर जब ये communication skills हैं तो you are very good in motivating through persuasions. बोल के, कह के you can motivate a person and you can boost the spirits of your followers. Motivational skills instill confidence in the mind of the follower. It helps inspire the followers instead of commanding them. So these are important. Now comes the decision making skills. A leader has to make countless decisions. Of course, a wrong decision may prove costly while a right decision at a crucial time may bring favorable results. Tackle issues as and when required without conflict. Steer the dynamics of the team to the next level. Then comes the planning. Planning is important in anything, so is in the leadership quality. Planning involves taking certain strategic decisions about the future. Planning includes the list of activities and the contingency plan that needs to be carried forward. Proper planning is like choosing the right track to get onto with the correct direction in mind. You can move towards the fulfillment of the goal. It also makes a leader organize his or her agenda by arranging first things first. This is the organization, this is the planning. चीजें आती जाएं, उसको ऑर्गेनाइज करके और प्लान करते जाएं. प्लान करके ऑर्गेनाइज करते जाएं या ऑर्गेनाइज करते जाएं. प्लान जो पहले आए उसको काम को लिया और उसको खत्म कर दिया. फिर आती है इंटेग्रिटी. A leader builds trust and this fosters collaboration and facilitates sharing of information. In this way he creates a solid team who supports each other's views. Integrity means honesty, fairness and creating good relationships. It is about personal values that cannot be compromised. Integrity speaks volumes on emotional intelligence. थोड़ा सा emotional intelligence भी आपको सिखाऊंगी कि ये क्या होता है और इसको increase कैसे किया जाता है in some of my upcoming lectures. Then comes teamwork. It involves cooperating with fellow members while nurturing their aspirations. Through teamwork, a leader develops a sense of collaboration while working with his peers and subordinates. It teaches the art of delegating work among fellow members, derive the support of others by emphasizing their good qualities. And the most important I think is the stress management. आपने stresses भी पढ़े, stressors भी पढ़े, different kinds of work stress पढ़ा आपने last few उसमें lifestyle वाले lecture में जो आपने पढ़ा था उसमें आपने stress को थोड़ा सा manage करने के तरीके भी पढ़े. जो leader होता है एक तो उसको अपने लिए सबसे पहले stress को manage करना आता होता है और फिर उसको team को कैसे stress management करवानी है उसको ये भी क्वालिटी में उसकी शामिल होता है. A leader manages stress
effectively. It teaches a leader to develop the ability to bounce back from setbacks without dwelling on a negative thoughts. उसमें negative thoughts के को overcome करना जो है positivity के साथ is a quality of a leader. It also develops the habit of being patient in any situation. यानी एक जो है aggression का element, violence का element जो है वो उसमें कम होगा और लीडर्स को knows how to handle the situation at a particular time with patience. Patience is very important और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो जिसमें होती है तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी का होना कोई अनहोनी बात नहीं है. The traits which leadership is existing are that they are intelligent people. Intelligence are that they are more intelligent than non-leaders. Leaders जो हैं उनके बारे में ये traits बोले गए हैं and these traits are given through research and knowledge. The other thing is they are more knowledgeable, being able to get things done. Knowledge भी उनके पास ज़्यादा है. And the personality is there, their verbal facility, honesty है, initiative है उनके अंदर, aggressive in a sense that they are strategically very aggressive, they do things aggressively, but aggression में और strategy में मैं आपको difference बताऊंगी और बताती रहती हूँ कि it's not aggression when a person is making a strategy और strategically तेजी से काम करना is not aggression. Aggression is destroying yourself or others with the action with the intention to destroy yourself or others is actually an aggression, but this is here it means the aggressive hard work, the aggressive work or aggressive decision making, which means that it is very strategic and to the point and immediate. They are self-confident, they are ambitious, they have the originality. It is not that what they are doing, they don't possess that quality. Whatever their action is, they internally possess the quality as well. Sociability, social होते हैं of course लोगों से मिलना क्योंकि उनकी communication skills अच्छी हैं and they are of course और हम बार बार ये कहते हैं कि जी they are what they are doing the action actually they are meaning it. तो जब if they are meaning it, they are having a good communication skills and they mean it what they are thinking, they are trying to persuade with other people, it means that they are also liked by others and they have the social skills much better than all others. Adaptability, they are adaptive to the situations, to the problems, to the newer situations, to the crisis, etc. Managers versus leaders, जो मैं आपको कह रही थी कि not every manager is a good leader, but if they are given these seats then and they are also possessing some leadership qualities, then they can be a very good managers. But now see the difference. What is the difference between managers and leaders? They focus on things. Managers focus on things. They do things right, while the leaders focus on people. Do the right things. वो चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, वो ऑलरेडी चीज़ों को सही करते हैं, प्लान करते हैं. ये लीडर्स इंस्पायर करते हैं, दे ऑर्गेनाइज द थिंग, दे इन्फ्लुएंस द पीपल, दे डायरेक्ट, दे मोटिवेट, वो डायरेक्शन देते हैं, ये मोटिवेशन बढ़ाते हैं, दे कंट्रोल द पीपल, दे बिल्ड and follows the rules, they shape the entities. So this is the difference between management and leadership, managers versus leaders. Everybody can be a leader to some extent at some situation, and you can be a leader as well. So knowing these theories, knowing all the characteristics, qualities, role of leadership, you all can be a leader, and you all possess those strengths in your personalities. Leader की मौजूदगी में nobody should feel inferior. Instead they feel that they are having some strengths जिनको कि अगर हम ऊपर लाएंगे तो हमारी encouragement, हम through motivation उनको ऊपर लाके अपने awareness में लाके और उनका maximum use करके अपनी life पर जो है वो एक successful और satisfied, competent, जिसको completeness के साथ self actualized feeling के साथ हम गुजार सकते हैं.
and everybody can be a leader. Not every manager is a leader. Manager और leader की आपने differences देखे, and we can acquire these qualities. No matter के according to one theory it is inborn, but there is another theory which explains that it is actually a learned behavior. So we all are and we all will try to learn and acquire some leadership qualities. Some we do have within us, आप में भी मौजूद हैं, और आप अपनी इन strengths को सिर्फ अपनी awareness में लाएं, कुछ को आप learn करें, कुछ को आप acquire करें, and then be a successful person, and you are a successful person. Thank you very much. Next lecture will be a continuation of social psychology, another topic under this area. Thank you very much. Allah Hafiz.